In Bank Nifty, I'm opening the chart right now. Just a second. Yes. So Bank Nifty, as we saw, opened gap up, and it is now presently trading at 51,337. Yesterday we saw the option chain analysis where we found that 51,100 and 51,200 call writers were decreasing their position. Today in the morning, what we are seeing is the highest OI on the call side is at 52,000 and the highest OI on the put side is at 51,000. The market is presenting at 51,341. 51,400 call OI is 1.96 and put OI is 1.76. And call OI on 51,300 side on the call side is 1.48. On the put side it is 1.6. So overall, the market is between 51,300 and 400, and we need to see which OI is going to take a lead, because second highest OI is at 51,500. If market starts trending up, then this 51,500 OI will start decreasing and put will start increasing. In the meanwhile, let us quickly go and see what are yesterday's high and low. So we'll quickly mark yesterday's high and low. So this is yesterday's high. And this is yesterday's low. Also, let me quickly go and see the weekly high and low, whether it is nearby. So 1 week high and low is quite far apart. It's almost here. 50 to 900 and 50 to 577 is the weekly high. And weekly low is 50,382. So these are our levels, and we are presently just waiting for the market. So as you see, the market has now started turning up from 51,300 level. Yesterday's high was 51,586. Let me remove all this so that you can
see. Yes. So presently it is at a resistance zone 51,451. And as we can see, the OI is also between 51,300 and 51,400. Now, if the OI increases on the call side, then resistance will be increasing. As we can see, 51,400, it has now become 2 million. And 51,400 is 1.84. So it has crossed 51,300. It is now between 51,400 and 500. So now it is between two good resistance on the call side. If this is broken, then we can expect a move up to 52,000. So let us go here and see what our candlestick patterns are up to. The high made in the first 5 minutes was 51,522. In the second high, it was 51,516. So today's high is not yet broken. But as you can see, we are expecting that it should not go below 51,300. But there is support at 51,230. तो क्या हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल ट्राई करने के लिए एक बार ये नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर ये ऊपर की मूवमेंट शुरू होगी, ऐसा भी हो सकता है. बट मोर ओवर, अगर हम ओआई के बेस पे अपने डिसीजंस लेते हैं तो ओआई फिलहाल तो भी ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट है, ये दिखा रहा है. 51,400 जो 2 मिलियन था वो 1.92 मिलियन हो गया अभी. एंड 51,400 का जो ओआई था वो पहले 2 मिलियन था 51,400 का. अब वो 51,400 का 1.92 और 51,400 पुट साइड 1.9 हो गया. अच्छे से कहा. 51,400 का कॉल 1.92 हो गया है और 51,400 का पुट 1.9 हो गया है. ये पहले 2 मिलियन था, तो ये अभी कॉल राइटर्स का नंबर्स कम हो गया है. अगर एक रिस्की ट्रेड लेना है तो हम लोग यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड देख सकते हैं. बाइंग अ कॉल स्मॉल क्वांटिटी एंड हैविंग अ स्टॉप लॉस से 100 पॉइंट्स. तो 51,200 का कॉल दिखते हैं, 322 का है. छोटी क्वांटिटी बाय करते हैं, 30 क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे देखते हैं. तो 51,200 कॉल, 30 क्वांटिटी बाय किया है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा.
रिस्की ट्रेड क्योंकि हमको अभी तक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिला है. वी आर इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसीलिए ये रिस्की ट्रेड है. तो इस तरह से वी आर प्लानिंग फॉर टुडे. ये हमारे लेवल्स है. अब आइडियली अगर हम देखें कि हमने कॉल तो ले लिया है, बट इफ वी गो एंड सी कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस 52,000, हाईएस्ट सपोर्ट 51,000, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्ट्राइक प्राइजेस है. तो अगर वैसे देखा जाए तो वी विल हैव 9 + 1, that is 10 areas, 5 अप एंड 5 डाउन, जहां पर बैंक निफ्टी रुक रुक के आगे बढ़ेगा. जैसे at 51,300, when it was trading between 51,300 and 400, the support was 51,340. 340 और 439 के बीच में वो ट्रेड कर रहा था, तो ऊपर या नीचे जाने के चांसेस कम थे. अब 51,439 के ऊपर अगर ये आएगा तो ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, और 340 के नीचे नीचे जाने के चांसेस रहेंगे. सिमिलरली 340 और 262, ये लेवल जो है, यहाँ पर एक रिवर्सल, एक जोन बनेगा जहां पर रिवर्सल हो सकता है या कंटिन्यूएशन हो सकता है. तो ये हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में जोन्स बनते हैं. तो कितने जोन्स काम में आएंगे यहाँ पर? एक ये 340, 252, 451, 555, 655, 638 एंड 655, 638 एंड 655, 737, 767 के बीच का एरिया, 835, 866 एंड 932 और 962. ये जो एरियाज है, ये एरियाज विल एक्ट एज areas where probable price action will be needed to be seen. ये जोन पर हमको प्राइस एक्शंस पर बार बार देखना पड़ेगा अगर हम एक ट्रेड कैरी कर रहे हैं तो. अभी फिलहाल तो 51,330, 51,281, इसमें सोच रहा था कि ये लेवल तक आएगा और फिर जाएगा. कल का जो सपोर्ट बना था वो लेवल को टैप करके फिर ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी क्या हो रहा है, 51,300 का ओ आई इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है. ओ आई भी इंक्रीज है और प्राइस भी इंक्रीज है. मतलब यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं, और यहाँ पर ओ आई इंक्रीज हो रहा है बट प्राइस डिक्रीज हो रहा है. मतलब यहाँ सेलर्स आए हुए हैं. वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओ आई 51,400 का इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस डिक्रीज हो रहा है. मतलब यहाँ पर सेलर्स है 51,400 लेवल पर. अभी सेलर्स यहाँ पर अभी देखिए वापस से, अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो गया. मतलब यहाँ पर भी बायर्स है. तो ये डायनामिक होने की वजह से कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस होते रहते हैं. 51,300 2.4 था, अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव था, उसके पहले फिर पॉजिटिव था. बट अगर ये प्राइस पॉजिटिव हो रहा है और वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बायर्स आ रहे हैं. अभी देखिए वापस -2.5 हो गया ना. दिस इज
289 नीचे चला गया है मार्केट। हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी विल बुक आवर लॉस। और अब ये लेवल के लिए रुके हैं आइडियली, कि अगर ये लेवल आता है तो दिस इज अ सेफ एंट्री। यहाँ से हम लोग सेफ एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसके हिसाब से एक सेफ एंट्री ली जा सकती है यहाँ पर। बहुत लोग ये पहली कैंडल देखकर ही यहाँ पर पुट बाय कर लेते हैं। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि भले ही यहाँ पर आप रेजिस्टेंस से आ गए हो, बट फर्स्ट 5 मिनट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और बहुत बार आप देखोगे कि आपने पुट बाय किया और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट द मार्केट सेटल फॉर अ वाइल एंड देन यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन कि आप क्या ट्रेड लेना चाहते हैं। तो दिस इज आवर लेवल। अब अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमको एक रिवर्सल पैटर्न्स बनने दिखते हैं ये जोन पर, तो देन वी गेट अ कंफर्म्ड सेफ एंट्री फॉर बाइंग अ कॉल। एंड देन हम थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पर। एंड देन 50% ऑफ आवर क्वांटिटी वी विल बुक एट yesterday's high, एंड रिमेनिंग 50% देखते हैं, अगर कंटिन्यू होता है मूवमेंट तो वील कंटिन्यू द ट्रेड, अगर कंटिन्यू नहीं होता है तो देन वी लीव द ट्रेड। So these are the levels for today which we have marked. I'll keep updating जैसे जैसे होता है, I'll keep you posted.